in the knowledge landscape, there has been a gradual shift from heavy reliance on content to learning how to learn. It is vital to address these changes and cater to the future. National Education Policy, NEP 2020, envisions redefining the education system. National Education Policy 2020 is in place to try and ensure that everyone has equal access to quality education. It will also make sure that the education system is rooted in the Indian ethos. Ladies and gentlemen, in the next decade, India will have the highest population of young people. The opportunities and the chances that they get have the potential to govern and direct the future of our nation. Hence, it is vital to ensure that all the gaps in the system are bridged. The National Education Policy 2020 proposes various promising notions, as all of we know. India's young population is an asset for the country and will be its largest advantage in overcoming the future problems. Though actions like establishing better standards for schools and the colleges, as well as the continuous and standardized assessment tools, National Education Policy 2020 aims to strengthen elementary education, improve secondary and tertiary education, develop skill, youth, and enable effective tracking of learning outcome. In short, without going into much of the details, in short, the National Education Policy 2020 emphasizes the holistic development of students in academic and non-academic areas. The policy, which is based on the fundamental pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability, which is the theme of the Roundtable Conference scheduled to be held during 17th, 18th, and 19th. It's in line with the 2030 Agenda for Sustainable Knowledge Superpower. As per the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's, the new education policy of 2020 focuses on learning instead of studying, goes beyond the curriculum of focus on critical thinking. National Education Policy 2020 has brought a paradigm shift starting from changes in the pedagogical structure to vocational training to the higher education system. It focuses on the quality rather than the quantity. More emphasis is given on the creativity and understanding rather than routine learning. The National Education Policy 2020 covers a wide ambit of the areas, which is the main focus in the Roundtable Conference scheduled at University of Kashmir. Therefore, the implementation of all at once is a big challenge for all of us. Keeping in view the challenges for the implementation of this policy and achieving the goals which have been envisaged by this policy, this conference is being organized by the University of Kashmir in collaboration with the Association of Indian Universities. We are expecting the deliberations on the wide range of issues pertaining to the policy and many more. We expect to discuss, communicate, learn, and move forward in the direction of making the goals reflected in the National Education Policy available today. Looking forward to have a fruitful discussion there. Thank you very much. In fact, we are delighted to welcome the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir and Chancellor of the University of Kashmir, Shri Manoj to this event. So your presence adds grace to this occasion and we hold your august stature in high regard. Shri Sinha, as the Lieutenant Governor, has ensured effective governance, administrative reform and people-centric policies, fostering growth and prosperity in the region. His focus on the education sector has led to key initiatives and reforms enhancing higher education in Jammu and Kashmir. Sir, your dedication to higher education and the intellectual growth of our youth is evident
and we look forward to further advancement under your leaderships. We are honored to have with us Professor Dinesh Singh Ji, Vice Chairman, Higher Education Department of JNK. His contribution towards redefining the curriculum and pedagogy in the Indian education system to be more transdisciplinary and problem-solving oriented has been remarkable. During his academic career, he has been emphasizing for a shift in the assessment system to focus on creativity and originality. For his outstanding services, especially in the education system of this nation, Professor Dinesh Singh Ji was conferred with the Padma Shri in the year 2014, one of the highest ranking awards of our country. I take this privilege to share that Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General of the Association of Indian Universities, is the second woman Secretary General of the association in its total 97 years of existence. Dr. Mittal has served as the first regular Vice Chancellor of Bhagalpur Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, which was the first rural women university of North India in 2008. At a young age of 44 years, her contribution towards the higher education sector for over 3 decades, especially university education, has been outstanding. I am sure that the deliberations which will proceed will be very beneficial, not only for our university and not only for your universities, but overall for the higher education system of our country. Present program, in fact, is a proud moment for the university, now in its 76th year, from its inception as the University of Jammu and Kashmir in 1948 to becoming a leading academic institution. Our journey has been marked by commitment and the pursuit of excellence. With 5 campuses across the Union Territory and 202 affiliated and constituent colleges, we fulfill our mission of disseminating education and illuminating lives with knowledge and wisdom and aspire to become a world-class institution. We prioritize high-quality outcomes in teaching, learning and research, fostering collaboration among stakeholders and maintaining a culture of inclusivity, diversity and harmony. We are proud to be a NAC accredited A+ university. Our ranking have been consistently improving with a 20-slot jump in the NIRF ranking this year, placing us at 33rd among universities in India. We also ranked 52nd in the latest QS World Ranking among BRICS nations. Over 54 years, the university has evolved into a premier institute of higher learning, emphasizing teaching and research. We have expanded to 5 campuses, 14 schools, faculties, 13 research centers, 43 teaching departments, and a wide range of programs. We have implemented the National Education Policy 2020 recommendations, becoming one of the first institutions to do so in Jammu and Kashmir. This transformation aligns with the policy's goals of expansion, holistic learner-centric education, and for the implementation of new education policy 2020, we had full support from the administration of Honorable Lieutenant Governor and our higher education department. We are also set to launch a degree, Design Your Degree program at UG level, nurturing individual creativity, professional skills and entrepreneurship amongst students. In addition, we regularly revise and update our curricula, introducing new courses and programs aligned with global standards, employability and skill enhancement. We have established various centers to harness diverse talents among our youth. The university is committed to fostering a culture of research, excellence, innovation and collaborations. Efforts in this direction have yielded results with increased extramural research projects, national and international collaborations, and higher research output. Faculty, scholars, and members maintain global research standards, emphasizing publication in
reputable journals. Notably, 9 faculty members rank among the top 2% most influential scientists globally as per Stanford University's 2023 listing. The university actively engages in national events of strategic importance, contributing to our growth. We hosted international Y20 events under India G20 presidency. We prioritize gender-related concerns, implementing gender-responsive reforms to create a gender-sensitive campus. In June 2023, the university received the Gati Achiever Award from the Department of Science and Technology, Government of India, recognizing our commitment to gender equity, especially in STEM disciplines. We organized an all-women entrepreneurship exhibition to promote women's economic self-reliance. We prioritize faculty development. They participate in numerous conferences, seminars, and workshops. We aspire to align with global standards, ensuring accessibility to higher education, democratic decision-making, and societal commitment. We are sure the present roundtable conference of Vice Chancellors with help of Association of Indian Universities will be very fruitful, and these types of exchange programs and research innovations indeed help the universities to grow. Indeed, the presence of all the esteemed Vice Chancellors will prove very vital for a platform to enrich the academic culture of economic reforms. This unique gathering provides us with an opportunity to engage in thoughtful discourse, exchange of ideas on matters of utmost significance in the realm of higher education. The importance of such gathering cannot be overstated, for it plays a pivotal role in steering the governance of our universities, nurturing partnership, tackling shared challenges, and igniting innovation with the academic sphere. With the primary focus on a selected set of themes, we aim to embark on a journey of productive dialogue and meaningful transformation. University of Kashmir is very thankful to Association of Indian Universities, especially to Dr. Pankaj Mittal for choosing University of Kashmir for this collaboration. We do look forward, ma'am, to have such collaborations in future also, so that our university can be more, have more collaborative programs with the various universities of our country. With these words, thank you all, thank you very much, and thank you to the Honorable Chancellor for this presence. University of Kashmir वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, सभी नवनियुक्त वाइस चांसलर्स, कश्मीर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर्स, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं सभी सम्मानित वाइस चांसलर का जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त वाइस चांसलर का यह राउंड टेबल इस वर्ष Y20 समिट और आदरणीय राष्ट्रपति जी के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति के पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं मानता हूँ, जहां वर्तमान एजुकेशन सिस्टम तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने आइडियाज और ओपिनियन शेयर करेंगे तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन का एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये आयोजन कश्मीर विश्वविद्यालय में रखा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किंग आर्थर जब राउंड टेबल मीटिंग्स की शुरुआत की तो उसकी कुछ परिकल्पना समुद्र मंथन जैसी थी, ताकि सभी बैरन की चर्चा से समाज, मानवता के लिए कुछ नए विचार निकल सके।
मुझे विश्वास है उसी भावना से श्रीनगर में वाइस चांसलर्स राउंड टेबल विश्वव्यापी दृष्टिकोण के साथ सभी संबंधित यूनिवर्सिटीज एवं देश के अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए नए विचार तथा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यापक प्राथमिकताएं ब्रॉड प्रायोरिटीज 3 दिन के मंथन में तय करेगा। पूजा पद्धतियों में एक शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, अक्षत, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप में जो होता है उसे हम अक्षत कहते हैं। अपने प्योर फॉर्म जो चावल पूजा में अर्पित किया जाता है उसे अक्षत का चावल कहते हैं, जिसे न पॉलिश किया जाता है न ही वो टूटा होता है, वो बिल्कुल अपने नेचुरल स्वरूप में होता है। और मेरी अपेक्षा होगी इस राउंड टेबल में बिल्कुल 2 टूक बातें हों, बिना परिष्कृत ये चीजों को जस का तस सामने रखा जाए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ 17, 18 और 19 अक्टूबर को चर्चा हो रही है उससे पूरे देश की एकेडमिक कम्युनिटी लाभान्वित हो सके। ट्रेडिशनली ये राउंड टेबल है, इसलिए मैं आज शुरुआत गैर परंपरागत रूप से करना चाहूँगा और कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वर्तमान में पूरी दुनिया में 300 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं। इनमें से लगभग 100 मिलियन स्टूडेंट्स प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं और लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 116 देशों ने क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अपनाया हुआ है और लगभग हर देश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक नेशनल रैंकिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। पिछले 15 सालों में दुनिया में जितने नए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए हैं उसमें 74% योगदान अकेले हमारे देश भारत का है, यानी कुल मिलाकर 22,250 नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारतवर्ष में शुरू हुए। हमारे देश में भी डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया कुल यूनिवर्सिटी की संख्या 1113 है, कॉलेज 43,796 है और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े नहीं हैं उनकी संख्या 11,296 है। इन सभी यूनिवर्सिटीज तथा कॉलेज में वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, बाकी एकेडमिक फ्रेटर्निटी की कुल संख्या लगभग 15.5 लाख है और कुल स्टूडेंट्स की संख्या 4.14 करोड़ है। अब भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 48,000। अब मैं डेटा दूसरा आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि तस्वीर साफ हो सके। रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना साउथ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कुल आबादी 23 मिलियन है और इसका 70% एरिया कालाहारी डेजर्ट है। बोत्सवाना के एजुकेशन डिपार्टमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उस देश में कुल 44 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष कुल विदेशी छात्रों का एनरोलमेंट 1200 था। इस 1200 में दूसरे सबसे ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स करीब 200 भारत से ही थे। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे थे और इसी तरह आप बांग्लादेश, अजरबैजान, ब्रुनेई, बेलारूस, बुल्गारिया, ओमान, श्रीलंका, रोमानिया जैसे अनेक देशों के डेटा को आप देखेंगे जिन्होंने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स को होस्ट किया है। आज लगभग 79 देशों में भारत के 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। 2020 के आंकड़े के मुताबिक हमारे देश से बाहर पढ़ने जा रहे स्टूडेंट लगभग 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर वर्ष भर में खर्च कर रहे हैं। इन सभी आंकड़ों का सबसे शॉकिंग पहलू ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
होने के बावजूद और उनके सपोर्ट में 4300 आधुनिक शहरों वहाँ स्थापित इंडस्ट्रीज की व्यवस्था के बावजूद हमारा एक भी इंस्टीट्यूशन दुनिया के टॉप 10 एजुकेशन हब में शामिल नहीं, क्योंकि जब तक हम सही तस्वीर पर ध्यान नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है कि फिर इस दिशा में हमें जाना है शायद तय करने में कठिनाई हो। ये शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी है। ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर की 4.7 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9 के बराबर है। आज मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कमजोरियों को सही में पहचानें, सुधार करें, प्रैक्टिकल इनोवेशन, क्रिएटिव डेवलपमेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंटरवेंशन करें, ब्रांड पोजिशनिंग करें, ताकि 2030 में वैश्विक एजुकेशन की अनुमानित एस्टिमेटेड $8 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सके और हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के टॉप 25 एजुकेशनल हब में शामिल हो। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बड़े कदम, बोल्ड एक्शन हमें उठाने हैं। ये सच है कि हमें अपने अतीत पर गौरव करना चाहिए। इतिहास में हम कभी जरूर एजुकेशनल हब थे, कभी नालंदा, तक्षशिला का गौरव हमारे पास था, लेकिन विकास की यात्रा तभी शुरू होती है जब नाव को किनारे बंधी जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। अब फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा हमें, वैसे ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस दोबारा बनाने होंगे और सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्वालिटी के आधार पर एजुकेट इन इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करना होगा। बहुत ज्यादा चर्चाओं का समय भी नहीं, अब टाइम बाउंड तरीके से एक्शन प्लान बनाकर काम करने का समय है। मैं 2-3 बातें मेरे पूर्व प्रोफेसर नीलोफर खान साहब ने, आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने विस्तार से बताया, तो उसमें मैं समय नहीं जाया करूंगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में NEP 2020 को लेकर के हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल ने, हमारी यूनिवर्सिटीज ने और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कैसे हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इसके कारण स्थिति में काफी बदलाव है। इस बदलाव को मोल्ड करने वाले, उसे समय के सांचे में ढालने वाले प्रोफेसर दिनेश सिंह जी हैं, हमारे सभी वाइस चांसलर्स हैं, जिन्होंने लीडर्स की भूमिका का निर्वहन किया है और अनेक नए इंटरवेंशन, अभी 2 का जिक्र मेरे सामने ही हुआ है, डिजाइन योर डिग्री एंड कॉलेज ऑन व्हील्स के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटी ऐसे टैलेंट को निर्मित करे जो फ्यूचर वर्क्स के लिए तैयार रहे। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे श्रीनगर में ही, कश्मीर, पिछले वर्ष विदेशी स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में उसने कार्यक्रम आयोजित किया था। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मैं भी था, और श्री जयशंकर हैरान थे। ये पहली यूनिवर्सिटी है देश की जिसने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया है दिल्ली में, और जो चिंतित है कि नहीं बाहर के बच्चे भी हमारी यूनिवर्सिटी में आने चाहिए। MOU भी वहाँ इस कश्मीर ने साइन किया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत के विदेश मंत्री स्वयं इस काम में रुचि ले रहे हैं और वाइस चांसलर इस कास्ट भी निरंतर उनके संपर्क में है। मुझे लगता है कि अब विदेशी दूतावासों की मदद से हमारे इंस्टीट्यूशंस का कैसे बाहर प्रचार, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बदलाव यहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन को प्रतिष्ठित करने का काम पिछले कुछ दिनों में हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल ने, वाइस चांसलर्स ने किया है।
देश की संस्कृतियों, मूल्यों और परंपराओं की संतुलित शक्ति के साथ भावी ह्यूमन कैपिटल विकसित करने तथा भारत के निर्माण में कैसे योगदान दिया जा सके, ये एक महती जिम्मेदारी सभी सम्मानित वाइस चांसलर की है। डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने 9 विषयों पर होने वाली चर्चा का एजेंडा भेजा है। एजेंडे ने उन सभी संभव विषयों को कवर करने का प्रयास किया है जो प्रश्नों के रूप में आज लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के सामने उपस्थित है। एजेंडा पढ़कर किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी ढूंढा जा सकता है जब पहले हम ये स्वीकार करें कि वाकई में कोई समस्या है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक साल हमने भी गुजारे हैं। टेबल के उस तरफ भी बैठ करके करीब से इसको देखा है, समझा है। अनेक दशकों तक यूनिवर्सिटी की घड़ी और रियल वर्ल्ड की घड़ी अलग अलग टाइम जोन में चलती रहती है। ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि दोनों में कोई संबंध ही नहीं रहा है। ये सच्चाई है। यूनिवर्सिटी और रियल वर्ल्ड में मौजूद गहरी खाई की वजह से जब स्टूडेंट कन्वोकेशन के बाद बाहर जाता था तो उसे एक झटका सा लगता था। अनेक पीढ़ियों को यह सौभाग्य था कि उस समय सरकारी नौकरी के लिए इतने जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। जिसने पीएचडी वगैरह कर ली उसे तो नौकरी की समस्या ही नहीं उस जमाने में हुआ करती थी। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते थे, तब मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था। उस पीढ़ी के हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि अपने व्यक्तिगत संकल्पों, समर्पण और त्याग के द्वारा उन लोगों ने सरकारी सिस्टम से अलग हटकर अपना खुद का वजूद स्थापित किया। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में काफी देर की। प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और आज हमें राउंड टेबल आयोजित करके इस बदलाव को और रिफाइन करने पर विचार करने के लिए आप सब एकत्रित हैं। मैं बात जरूर कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी को भविष्य में रिलेवेंट रहने के लिए एक विशाल प्राइवेट कारपोरेशन की तरह काम करना चाहिए, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल यूनिट अलग अलग पार्ट की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करें, लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिक मैकेनिज्म भी तैयार करनी होगी। हर एक सेक्टर में बदलाव की स्पीड पहले की अपेक्षा कई गुना तीव्र हो गई है और उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए सबसे बड़ा रिवोल्यूशन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले तक एजुकेशन का उद्देश्य किसी तरह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, न कि उसका लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये था नहीं। अगर भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लीन और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक के बाद एक डिपार्टमेंट्स की लेयर्स हमने इकट्ठा कर रखी है। घुमा फिरा कर हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के 3-4 कोर्स पढ़ा रहा है। कंप्यूटर साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, मैथ का अलग है, डिजाइन अलग है, साइबर सिक्योरिटी अलग है। अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों पर हमारे एकेडमिशियंस कि साइलोज में खड़े स्ट्रक्चर्स और स्टूडेंट्स के बैगेज को कम करने का प्रयास, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डिजाइन और डिग्री जैसे कार्यक्रम इस दिशा में नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रदान किया गया है। उससे सालों से रुके हुए रिफॉर्म को जमीन पर लागू करने की जो दीवारें खड़ी उन्हें तोड़ने में मदद मिल रही है। यूनिवर्सिटी पर न सिर्फ फाइनेंशियल बोझ कम होगा इससे, बल्कि लक्ष्य भी स्पष्ट होंगे और इस तरह का एजुकेशन, इस तरह की यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसे प्राप्त करने के पश्चात स्टूडेंट घर न बैठे, खाली न बैठे, इसका प्रबंध भी शायद हम कर सकें। सच्चाई ये है कि अभी तक लक्ष्य हमने स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए थे। हम सिर्फ आउटडेटेड सिलेबस पूरा करके एग्जाम लेकर डिग्री दे रहे थे। अब ये व्यवस्था जितनी जल्दी हम बदल सकेंगे, मुझे लगता है
उतनी जल्दी विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान एजुकेशन सेक्टर दे सके। पिछले वर्ष 1000 के आसपास भारतीय स्टूडेंट फिनलैंड पढ़ाई करने गए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से भी आधी आबादी वाले उस देश में आजकल ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने स्टूडेंट्स को कस्टमाइज्ड एजुकेशन प्रदान करने की व्यवस्था की है। वहाँ उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को 3-3 हफ्ते के मॉड्यूल में कैटेगराइज किया है। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहा है तो सभी को 3 हफ्ते के लिए टास्क दिया जाता है कि आप स्क्रैच से एक बिजनेस मॉडल बनाकर दिखाइए। स्टूडेंट के दिमाग में पहले ही ये बात भर दी जाती है कि आप एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं और फिर 3 हफ्ते उसकी डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है। 1.5 महीने में स्टूडेंट का वर्ल्ड व्यू ही चेंज हो जाता है और क्लासरूम स्टडी को भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगता है। फिर उसे मैथ सब्जेक्ट से संबंधित कोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, सुपर सिटी स्ट्रक्चर, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, टेलीकॉम जैसे सब्जेक्ट भी 3-3 हफ्ते के मॉड्यूल के रूप में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी, डिजाइन और बिजनेस को फ्यूज कर दिया है। और इसलिए आपने गौर किया होगा कि टेलीकॉम के एंड टू एंड सॉल्यूशन तथा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक समय में फिनलैंड दुनिया के अन्य देशों से बहुत आगे था। अगर आप सभी सहमत हों तो उसकी प्रैक्टिकलिटी स्थानीय परिप्रेक्ष्य में सॉलिड है, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस के मुताबिक है, तो इस मॉड्यूलर सिस्टम को क्या हम अपना सकते हैं? मुझे यकीन है आने वाले 3 दिनों में आप इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए शायद कुछ लोग सोचेंगे कि फिनलैंड से तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि क्लासरूम में 5 स्टूडेंट हो या 50, उससे क्लासरूम या यूनिवर्सिटी के वैल्यूज में अंतर कैसे आ सकता है, उसकी क्वालिटी में फर्क कैसे पड़ सकता है। अगर हम भारत को विकसित देश की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस को हार्ड डिसीजन लेने होंगे। मुझे प्रसन्नता है डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने एजेंडे में यूनिवर्सिटी के फिस्कल चैलेंजेस को भी शामिल किया है। इस विषय से मेरे मन में एक सवाल आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या अन्य कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट रेवेन्यू सोर्स से कितना पैसा हर साल इकट्ठा करती होगी? बजट का 5% या 10%, या हो सकता है कि ऑडिटोरियम या गेस्ट हाउस के रेंट मिलाकर अधिक से अधिक 15%। इस मामले में स्पेन की हार्बर यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रयोग किया है। उनकी योजना भारत में भी कैंपस शुरू करने की है। हार्बर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक मीटिंग में कहा कि साहब, हमारे पास इसे चलाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है और अब पैसा उनसे लेना होगा जिनके लिए हम ये टैलेंट पूल तैयार करेंगे। उन्होंने हर एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर का दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि आप कुछ पैसे दीजिए, अभी से हमारे स्टूडेंट रिमोट वर्क स्टेशन से आपकी कंपनी के लिए दिन में 2 घंटे काम करना शुरू करेंगे। जो स्थानीय एम्प्लॉयर थे उनके यहाँ जाकर काम करने की व्यवस्था की गई और एम्प्लॉयर फंडिंग की वजह से आज उनका रेवेन्यू स्ट्रीम टोटली डाइवर्सिफाई हो गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेशन एक ऐसा विषय है जिस पर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए सही निर्णय यूनिवर्सिटी को भविष्य में इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग दे सकता है, स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान कर सकता है। मैं जानता हूँ मैंने काफी वक्त लिया है, कई सारी बातें कहने को हैं, लेकिन मैं 2-3 बातों को कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जरूरी है कि टीचर्स, प्रोफेसर्स में भी मोटिवेशन लेवल उतना ही हो जितना जब स्वयं वो स्टूडेंट थे। अब कुछ दिन पहले हर्ष गोयनका, एक बिजनेसमैन है, आप सब जानते हैं, आरपी गोयनका के लड़के हैं, पावर सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ की कुल सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने है
वो हैरान थे कि जो आदमी देश को चांद पर पहुंचाने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहा है, वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाता है और उसे कोई भी बोनस दूसरा नहीं मिलता है। अनेक लोगों की उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया आई थी और एक सज्जन ने लिखा कि वह जो काम कर रहे हैं वो उनका पैशन है और चाहे सैलरी जितनी मिले उनका मोटिवेशन लेवल कभी कम नहीं होगा। प्रोफेसर्स में आमतौर पर टीचिंग प्रोफेसर में आने के बाद मोटिवेशन लेवल कम न हो, मुझे लगता है कि ये जरूर इस पर विचार आप सब करेंगे। वो कैसे बरकरार ही न रहे बल्कि आगे बढ़े, इसके लिए क्या मॉड्यूल बनाया जा सकता है। स्टूडेंट फीडबैक के अलावा हर प्रोफेसर के परफॉर्मेंस, उनकी सीखने और सिखाने के मोटिवेशन को मॉनिटर करने की क्या कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। और इसलिए न बनाई जाए कि उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखे, इसलिए बनाई जाए कि स्वतः यूनिवर्सिटी उसका मूल्यांकन करे। यह व्यवस्था आज दुनिया के अनेक देशों में लागू हो गई। इसका एक बड़ा कारण है कि प्रोफेसर था वाइस चांसलर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रोफेशन की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक वो विश्व के सबसे सम्मानित प्रोफेशन की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। इस सम्मान का आदर करते हुए टीचिंग पैशन ऐसी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी और सुनिश्चित भी करनी पड़ेगी। एक दूसरा सुझाव है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये किताबों से नहीं सिखाई जा सकती। ऐसी व्यवस्था हमें यूनिवर्सिटीज में बनानी होगी। हर हफ्ते स्टूडेंट फील्ड लर्निंग में इन्वॉल्व हो। अभी मैं कल अनंतनाग गया था, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बनाया है और 8 महीने हो गए। 5 साल में हमने टारगेट रखा है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। वहाँ के यंग कलेक्टर ने हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को फील्ड में भेज करके हम भी किसान बने एक नया कार्यक्रम शुरू किया और मैं बड़ा उत्साहित था कल वहाँ के कलेक्टर की व्यवस्था देख करके। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग हमें और करने होंगे। हर हफ्ते स्टूडेंट फील्ड लर्निंग में इन्वॉल्व हो। एक चिंता का विषय क्वालिटी अश्योरेंस, एक्रेडिटेशन, रैंकिंग के प्रति बहुत जगह उदासीनता दिखाई पड़ती है। कई बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पुश करना पड़ता है कि आप लोग वर्ल्ड रैंकिंग तथा NIRF के लिए, जिसका जिक्र भी डॉक्टर मित्तल ने किया, हर एक इंस्टीट्यूशन में इसका व्यवस्थित मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में हर कैंपस में एक सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई जा सकती है जो समय सीमा में उद्देश्यों को इम्प्लीमेंट कर सके। मित्रों, विश्व में हर हफ्ते बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव लीनियर नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियल है और उसी के अनुरूप यूनिवर्सिटी को बदलना होगा और अन्यथा हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आज अनेक विदेशी विश्वविद्यालय भारत आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास एजुकेशन का जो डिसरप्टिव मॉडल है वो वर्तमान की जरूरतों के मुताबिक है। अब केवल ये संतोष और प्रसन्नता का विषय नहीं, फिर हमारी प्रासंगिकता क्या रहेगी? आज नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में खतरा हमारे ऊपर मंडराने वाला है। मुझे लगता है कि यही समय है, सही समय है जब हम सब अपने क्लासरूम में बदलाव करें, कैपेबिलिटी बिल्ड करें ताकि आने वाले कंपटीशन में भी हम खड़े रह सकें और जो ख्याति हमारी रही है पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि उस ख्याति को, उस गौरव को फिर से हम प्राप्त कर सकें। यही निवेदन करता हुआ मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हुआ और दिनेश सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Wherever I have been in other parts of India, in the context of education, because that's where I specialize, I have found so much interest, curiosity and respect for what is happening in the Union Territory of Jammu and Kashmir. And let me give you a sample. So, a couple of months ago,
I was at the Indian Institute of Science, Bangalore. And we were in discussion with scientists at the institute and with officials of the Indian Space Research Organization. And why were we there? Because the kind of support that we have received from the Honorable MG has allowed the state of Jammu and Kashmir, the Union Territory of Jammu and Kashmir, to launch many interesting programs that blend with each other in a harmonious fashion. One of those programs which will spearhead educational reform in this region is the launch of the train College on Wheels, which will ferry more than 700 students across many parts of India and will serve as a college on wheels. I have found nothing but support from him and his administration in carrying forward this activity. More than 700 girl students and probably 200 odd faculty will visit various parts of India, will work on projects. This is not a tourism activity. They have been chosen already and are now being initiated into the aspects of the journey. They will work on projects connected with many facets of the journey. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been a pioneer. We were able to do all this because at moment's notice, when we made a request, a significant budget was sanctioned for such activities. I can tell you, sir, that nothing gives me more joy than visits to the Union Territory of Jammu and Kashmir because of the progress that I find here in the realm of education. Thank you very much. And I find, when I come to the University of Kashmir, that the Vice Chancellor here does exactly what we would expect of a good Vice Chancellor, and we are delighted that she is so supportive of all the activities that will bring about renewal for our youth, which will bring forth hope, which will bring forth excitement, and most importantly will allow the youth to find their destinies. The sole purpose of education is to allow the youth to be able to discover his calling in life. And the activities that the Union Territory of Jammu and Kashmir has undertaken in the realm of education embodies the principles and spirit of the national education policy, and I can say this with conviction because of Vice Chancellors like Professor Nilofer Khan and others, Professor Umesh Rai at Jammu, Professor Ramshu at the Islamic University of Science and Technology. Collectively, the Union Territory of Jammu and Kashmir will show the way to India in the best practices that will bring forth a flowering in education through the national education policy. I welcome this conference. Professor Pankaj Mittal has been a dynamic Secretary General of the Association of Indian Universities. I have been acquainted with many Secretary Generals, all of whom have acquitted themselves quite well. But Professor Pankaj Mittal stands apart, and I am delighted that she took this initiative of her own volition, decided to organize this conference of Vice Chancellors who are serving the first term as Vice Chancellor, and chose Srinagar as the venue. When we mentioned this to the Honorable Lieutenant Governor, he immediately accepted. And I think this is the first and welcome step, and I hope under her leadership there will be many more such activities. I have been part of some of these activities and have been first-hand witness to the way Professor Mittal brings new ideas to the table. Education has to be a collective enterprise. It cannot function in isolation, in a vacuum. The idea that a campus is something isolated, not connected to society is long gone and outdated. And the national education policy allows us to re-establish and in a way redefine education by treating the world as a university. In that context, we are all gathered here today and for the next 2 days to be able to exchange ideas that will bring forth better happenings, that will bring forth good tidings for our youth. As I said, I have a firm belief that because of the activities that Jammu and Kashmir has undertaken,
in the realm of education, the concept of the national education policy, which truly says treat the world as a university, will be best embodied. And Dr. Pankaj Mittal has been good enough to bring forth so many minds from different parts of India who have come here with the same good cheer and spirit, and I welcome that. With these words, I once again thank the Lieutenant Governor and others present on the dais and the audience for being here today. Thank you very much. Jai Hind. First of all, I would like to thank Dr. Neelufar Khan and her entire team for organizing this conference on behalf of AIU. And they have been doing, a lot of work for last 1 to 2 months to organize this conference successfully. And I hope that the Honorable Vice Chancellors who are attending this conference as a participating Vice Chancellor, some are there physically and many are there online also, they will find a lot of value because we have very good speakers and very good topics for this particular conference. As far as AIU is concerned, many of you would be knowing that AIU is the largest university association of the world with about 965 universities as its members. And in our country we have around 1100 universities, out of which 965 are our members, and the membership is voluntary. So you can see that the people see value in the membership of AIU. It is an organization which is about 100 years old. We were established in 1925, so in 2 years we will be celebrating our centenary. If you see the stature of AIU, who have been the presidents of AIU in the past, it is certainly Dr. Ramakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Dr. Shrimali. So these have been the presidents of AIU in the past, which tells you the legacy of AIU. With regard to functioning of AIU, we are doing multiple functions. Again, this is the only university association in the world which is engaged in multiple functions. We engage with the Vice Chancellors in terms of having not only the roundtable of newly appointed Vice Chancellors, but we also hold 6 Vice Chancellors conferences every year. Like for example, this year the theme is Higher Education at 2047. So during the Amrit Kaal, what all we can be doing to make India a wish to grow in 24/7. So we are doing a lot many conferences at regional level, at national level for the Vice Chancellors. We engage with the teachers by holding many capacity building programs for them. For example, we have established AADCs, Administrative and Academic Development Centers in various universities, where we are training the teachers on how to use technology for effective teaching learning, for effective governance, for effective research. So those are the 15 AADCs we have at present. Similarly, we are engaging with the students in a multiple manners. For example, we hold many sports activities for the students, again at the zonal, national, international level. You have seen the performance of our students in the World University Games. 28 medals in the World University Games is the history. This year, 28 medals are more than the medals we have won since independence, cumulative, total medals also if we count. In this single year, we have had more medals than those all total. We also hold cultural programs because we believe in the holistic development of the students. So we do hold cultural programs again at the zonal, national and international level. So we are, and also very important is a program called Hon'ble, in which we engage the young students to engage in research. So the students submit a research project which is evaluated and good prizes are given. And this year we have internationalized Hon'ble. Internationalized means one student from India and one student from foreign university will be collaborating and submitting a research project, and we are seeing very good response from foreign universities. If some of your students have applied, it is very good. If they have not applied, 20th is the last date. Please tell your students to apply for the Hon'ble. This is a very good program. We also, we have been mandated by the Government of India to do equivalence of foreign degrees with the Indian degrees. So that is also one of our main mandates. Coming to this, and before I come to this roundtable, we are also engaging a lot in internationalization of higher education. We have established a network called Indian Network of International Higher Education. The purpose is that many of our universities, because when we meet the Vice Chancellors, there are around 10% of the universities who are actively engaged in internationalization.
But 90% of the universities are such who want to do internationalization, who have the intent to do internationalization, but they don't know how to do it, whom to talk to, whom to collaborate with, how to find a partner, how to start a dialogue. So we have established INHI, Indian Network of International Higher Education, to support such universities. So we are taking many activities on our own so that we can be helping our universities to progress further, not only academically and research, but also internationally. Recently we went to Taiwan with a delegation, and there were many opportunities between India and Taiwan for collaboration, and the way they teach and the way we teach, it was entirely different. So we want all of you to learn a lot about all these things. Now coming to this particular roundtable, we do have, say, orientation program for the teachers. Although for the school teachers there is a full-fledged brigade program, there is no such program for the university teachers, but of course there is an orientation program and refresher courses for the teachers. But for the vice chancellors who are appointed in the universities, there is no program which can train the vice chancellors on how to do the vice chancellorship in the best effective manner. Therefore we thought that we should be helping our vice chancellors, because all of a sudden the professors are doing a lot of research, and when they become a vice chancellor, there are a number of activities which they have to undertake for which they are not trained so far. Therefore, we are holding this roundtable where there will be various topics, I mean, starting from how to have a good vision for the university, how to have a strategic planning for the university, how to ensure financial stability of the university, how to even get funding from various sources, various philanthropic sources, how to do the sustainable development of the university, how to do the quality assurance, how to go in for the ranking, whether it is Indian ranking or international ranking, how to do a lot of student support, including the mental health of the students, how to do the governance and leadership, and if there is a crisis, how to manage the crisis for that particular university, how to promote excellence, how to promote skilling. So there are so many topics which the vice chancellors should be knowing if they want to be effective vice chancellors. Therefore, we are holding this roundtable conference for the newly appointed vice chancellors, and not only the ones who are present here, even the ones who are appointed and who are not able to come here, they will be able to see all the sessions through the Zoom link which is provided to them. Since morning I am getting the messages, ma'am, Zoom link is not working, so I am telling them it will work when the sessions start. So in Inaugural there is no Zoom link, but from the sessions the Zoom link will be working, and the vice chancellors will be able to attend the sessions and know that how to effectively grow in the university. So this is our purpose, and we are always with the universities, for the universities, and we hope that this conference will be very successful. Thanks to all the speakers for coming here, thanks to all the vice chancellors for joining physically, and thanks to Dr. Nilofer Khan and her entire team, Professor Farooq, for engaging with all of us in a very strong manner so that we can hold this program successfully. Thank you very much. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this occasion. I, on behalf of University of Kashmir and the entire team that organized this roundtable conference, profusely thank our Honorable Chief Guest, Shri Manoj Sinha ji, for his valuable time to join us. Sir, your address is always insightful and one that inspires hope, optimism, pride in all of us and guide us for better tomorrow. Your continuous support, patronage and guiding vision to develop beauty of Jammu and Kashmir on solid foundation of education that will change the lives of generation of the students and the society. Sir, on behalf of University of Kashmir, I also immensely thankful to you, sir, for inviting Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, on a recently occasion of our convocation. We are grateful to Honorable Professor Dinesh Singh ji, who is the Vice Chairman of State Higher Education Council. It is again the visionary Honorable Chancellor, University of Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, that our State Higher Education Council became
functional and operational rather, I would say. And he has got Professor Dinesh Singh ji to be the Vice Chairman of this State Higher Education Council, and under his directions, we are now operating two important courses at all the universities and all the colleges in J&K. One is the College on Wheels and another is the Design UAW. Thank you, sir. I'm grateful to Dr. Pankaj Mittal ji, who has been my colleague also at University Grants Commission, for giving us an opportunity to hold this roundtable conference at University of Kashmir and inviting all the Honorable Vice Chancellors from different parts of the country to visit Kashmir and be a part of this roundtable conference. Grateful, man. Honorable Vice Chancellor, University of Kashmir deserves a lot of appreciations and thanks for giving us an opportunity to hold different events at the University of Kashmir and guiding the university teachers and the university administration for getting the university back on rails and towards the march of excellence.